नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। ये हेल्थ आवर है बाय अपोलो 24/7, जहां हम लाते हैं अपोलो के एक्सपर्ट्स को आपके सामने। ये लाइव शो में वी ब्रिंग यू द एक्सपर्ट एंड आप पूछ सकते हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब चैट पे आपके क्वेरीज जो भी है आप टाइप कर सकते हैं एंड हम आंसर्स लाएंगे अपोलो एक्सपर्ट्स से। तो ऑन द शो वी ऑल्सो हैव coupons to be given away, discount vouchers, and आपके लिए एक हेल्थ क्विज भी है जहां आप आंसर कर सकते हैं यूट्यूब चैट पर एंड वी पिक अप विनर्स एंड गिव अवे प्राइजेस फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल्स एज वेल। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं टुडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डाइट एंड होम रेमेडीज ये सब क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. Dr. Amitava is going to join us, who's a general physician from Apollo Multispeciality Hospitals, Kolkata. And Dr. Saab is going to answer all your questions. To join us on our YouTube channel, you must be watching this on Facebook and Instagram as well. But we request you to join us on YouTube channel as well to ask your questions. एंड डॉक्टर अमिताभ रे जी का प्रोफाइल है, काफी एक्सपीरियंस्ड है सर, 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है. ही स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, uric acid levels, dyslipidemia, and his professional memberships include IMA and Medical Council of India, and he is awarded the Keepers of Flame, the COVID Warrior Award as well. Let me welcome Dr. Amitava Ray to the show. Good morning, doctor. Welcome to the show. Good morning, madam, and good morning to all the viewers. Ji, sir. Sir, it's wonderful having you back onto the health hour where we get a lot of information from you. आप जो भी हमें जो छोटे छोटे टिप्स देते हैं, they are very very useful, and I suppose constipation is something that is a larger problem than we experience and affecting a large population. तो हमारे देश वी हैव मूव्ड ऑन, हमारे लाइफस्टाइल काफी तेजी से बदल चुके हैं. क्या असर पड़ रहा है हमारे बोवल मूवमेंट्स पर, या हमारे कॉन्स्टिपेशन का क्या लार्ज लूमिंग प्रॉब्लम है? First of all, constipation हम बोलते हैं जिसको we have to say is that when we have difficulty in passing the stool in जी. more than 3 to 4 times per week, then comes into the constipation. Constipation is जी. the first hard and very hard stool. You one who has to stress जिनको बहुत तकलीफ बहुत एफर्ट देना पड़ रहा है स्टूल पास करने के लिए, जिनको स्टूल करने के बाद लग रहा है कि मुझे इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हुआ है, पूरा साफ नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि रेक्टल फुलनेस है, जिनको लग रहा है कि रेक्टल फुलनेस है आफ्टर पासिंग द स्टूल, जिनको लग रहा है कि डिजिटल इवैक्यूएशन कर लेना चाहिए कि स्टूल लग रहा है कि स्टूल उधर अटक रहा है. हाँ जी. सर, दैट इज व्हाट वी से अ कॉन्स्टिपेशन. इसको हफ्ते में 3 के बाद से ज्यादा नहीं होना, ये हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. एंड व्हेन इट बिकम्स मोर देन 3 months, तो हम इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. टू लर्न अंडरस्टैंड कॉन्स्टिपेशन, एक बात समझना चाहिए, हाउ ए स्टूल इज फॉर्म्ड. अगर कोई जी. किसी, देन वी कैन अंडरस्टैंड बेटर हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. समझ ले हम लोग खाना खाते हैं, तो दीज आर हाँ. ऑल ट्रांस्ड टू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द टेथ. दांत से हम लोग उसको चबा के छोटा पीसेस कर लेते हैं, उसके बाद सलाइवरी जूसेस उससे मिक्स होता है. हाँ. देन द मिक्सचर वाया इसोफेगस गोस टू स्टोमक. हम छोटे से हाँ. डाइजेशन इन सिंपल लैंग्वेज समझ जाते हैं. उधर स्टोमक में जाकर के गैस्ट्रिक जूस वगैरह ये सब मिल जाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, हेपेटिक जूस जो है वो सब मिल जाके डाइजेशन होता है. उसका बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द लिक्विड फॉर्म, इन द इंटेस्टाइन, जहां पे ये सर न्यूट्रिएंट्स ये लोग उठा लेते हैं, जो एसेंशियल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा बॉडी सिलेक्टिवली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट, जो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उधर से एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं. Then जी. it goes to the large intestine, where most of the water part up till now ये liquid form में जा रहा था. अभी इधर से जी. पूरा वाटर लार्ज इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब हो गया, तो ये सॉलिड हो गया. उसके बाद ये सॉलिड होने के बाद रेक्टम बोलकर एक डायलेटेड पाउच में आके स्टोरेज बैग में आता है. जब ये सफिशिएंट अमाउंट होता है, तो स्टोरेज बैग का जो वॉल्स है वो स्ट्रेच होता है. स्ट्रेच रिसेप्टर से हम लोगों को मैसेज आता है दिमाग में कि वी हैव टू
आज फॉर स्टूल आ गया, वी हैव टू पास दैट स्टूल. सो हम लोगों के वो नेक्स्ट इट हैपेंस, जब हम लोगों के पास जो एक एनल ओपनिंग होता है जो उसको पाता, वी कैन कंट्रोल दैट. एंड आफ्टर फाइंडिंग अ सुटेबल प्लेस, we open it and the stool comes out. This is the simple physiology of stool formation. अगर इसी रास्ते के अंदर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो गए, फॉर एवरी ऑल पर्पसेस, देन द कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स कम्स इनटू द पिक्चर. वंडरफुल इसका हजारों. एक्सप्लेनेशन, वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दैट आपने दिया है. यस. सो तो एनीवेयर इन दिस आपने जो प्रोसेस बताया है जिसमें कई भी प्रॉब्लम हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, फिजियोलॉजिकल हो या लाइफस्टाइल हो, इनके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. तो या. हमारे ऑडियंस ने क्वेश्चंस शुरू कर लिए हैं. तो वन रिक्वेस्ट दैट आई वुड वांट ऑल द ऑडियंस टू काइंडली नोट कि whenever that you're typing a question in the YouTube chat box, I will request you to kindly place all the information in one message, not to break your message like you know how WhatsApp text में आप hi hello how are you ऐसा मत कीजिए. पूरा मैसेज एक ही में डाल दीजिए so that it will be easy for us to pick up your problems and we might give you an easy solution. सर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के एल्डरली तक एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस. सो ये एज के हिसाब से बढ़ता है या बच्चों में भी होता है? कॉन्स्टिपेशन के साथ एज का कुछ रिलेशनशिप है सर? नो, कॉन्स्टिपेशन के साथ एज का कोई रिलेशन है, बट द थिंग इज दैट व्हाट वी से इज दैट बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया कि स्टूल कैसे फॉर्मेशन होता है. नाउ आई एम टेलिंग द डिटेल्स क्यों क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है. हाँ फर्स्ट जी. ऑफ ऑल देयर आर सम डायटरी फैक्टर्स. मैं बाद में क्वेश्चन करेगा जब मैं पूरा डिटेल्स में आंसर दूंगा. डायटरी फैक्टर्स से एक कॉन्स्टिपेशन का आता है. जी. एक हम लोग फाइबर कंटेंट ये सब के ऊपर डिपेंड करता है. मैं बाद में अगर कोई क्वेश्चन जब पूछेंगे तो मैं हाँ जी. बताता जाऊंगा. इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक से होता है. जो रेगुलर हम लोग, मैंने जहां बोला है कि जैसे हम लोगों का स्टूल पैसेज होता है, देयर इज अ मसल टोन इन्वॉल्व इन दैट. सो ओके. अगर इंटर प्रेशर हम लोग मसल टोन उधर से खराब होगा तो पेरिस्टोलसिस नेचुरली, जिसमें जो लाइफस्टाइल के अंदर पेरिस्टोलसिस अफेक्टेड होगा उसमें ही कॉन्स्टिपेशन आएगा. Second, there are certain drugs which we use. Medical conditions जिसमें constipation होता है, starting from the metabolic endocrine disorder, ये सब में तो there is different thing. There is diabetes हो या thyroid हो या जो other calcium hypocalcemia, hyperkalemia, और ये सब liver disorder या किडनी डिसऑर्डर या सर्टेन न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर में होता है, जैसे पार्किंसनिज्म में होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, चागास डिजीज, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम, हास्पुंग्स डिजीज, ये सब में होता है. देयर आर सर्टेन ड्रग्स, जैसे हम लोग जो ड्रग लेते हैं, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, एंटी स्पैस्मोटिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, सर्टेन एंटी डिप्रेशंस, डायूरेटिक्स, ये सब भी कॉन्स्टिपेशन करता है. बट अच्छा. ये सब जो है, दीज आर ऑल मेडिकल कंडीशंस, दिस हैज टू बी टेकन केयर बाय द डॉक्टर. हाँ, हाँ. कुछ कुछ में जिसमें जिनको एनल फिशर है, जो पेनफुल कंडीशंस फॉर डिफिकेशन है, डाइवैकुलाइटिस है, ये सब डॉक्टर मेडिकल कंडीशंस डॉक्टर पर फोकस करना है. यू दिस वी कांट ट्रीट एट होम. माने हम अलोन नहीं ट्रीट कर सकते, हमको मेडिकल हेल्प लेना है. बट जो एब्सोल्युटली. दूसरा किस्म का मैंने बोला कि जो डायटरी फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, एक्सरसाइज है, फ्लूइड इनटेक है, वो दैट वी कैन मैनेज एट होम, वो हमारा ऊपर है, दैट वी कैन टेक कंट्रोल. वंडरफुल. सो जैसे आपने बोला फिशर्स का, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टू वेज. Somebody was pregnant at a point and then they had constipation in the gestational period. Gauri, hello sir, I was having severe constipation after delivery. Now it turned into a fissure. It is not resolving even after much of treatments. तो यहाँ पर मुझे ये भी बात करना था कि there are certain periods of life and especially reproductory phase में women do face constipation and then ये हो सकता है क्या कि constipation piles या fissures create कर सकता है? हाँ, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स और फिशेस दोनों ही क्रिएट कर सकता है, बिकॉज व्हेन देयर इज पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल, द लोकल एरिया जहां से ओपनिंग में से वो आता है, अब वो टिश्यू अगर डैमेज होगा तो उधर से वो पाइल्स हो सकता है, देयर इज क्रैकिंग, देयर इज इन्फ्लामेशन, तो वो फिशर हो सकता है.
बट हाँ मैंने जैसे आपको बोला कि उसी टाइम में अगर प्रेगनेंसी टाइम में हो और या रिप्रोडक्टिव टाइम में वॉट एवर, regular lifestyle with the dietary modifications, with the high fluid intake, with high fiber diet intake, we can modify these situations. With the pelvic floor exercise, आजकल बहुत they are much more. The gynecologists routinely prescribe the pelvic floor exercises in all patients जिनको वो जी लोग pregnancy के बाद. So these are all contributing to the less incidence of constipation nowadays. Medical problem. One of the pregnancy is one of the cause, metabolic and endocrine causes of constipation. हाँ. So I personally have experienced after a delivery. यहाँ पर Ashifa said and Gauri, both of them are pointing out the same thing. कि after delivery it continued. One, I was in my personal case, I was consuming a lot of water क्योंकि we were into feeding, breast feeding के लिए भी पानी का काफी importance था. But still we went into constipation, and there are a lot of people who are asking. So at that point, any laxatives which are safe? Yeah, all laxatives are safe, which are using now. We are using nowadays basically four types of laxatives. Number one is the what we are using nowadays is the osmotic laxatives. Second, we are Osmotic. using, yeah, osmotic laxatives we are using nowadays. So Okay. what if there are basically we are using nowadays four types of laxatives. One is the Okay. osmotic laxatives, one is the bulk laxatives which we use nowadays, and second is that what we use nowadays is the stimulant purgatives and the stool softeners. The Okay. role of bulk purgatives is that these are all non-absorbable solid materials. They absorb water from the intestine, and they absorb water that increases the bulk of the stool. The intestinal, whenever the volume of the stool increases, the intestinal wall, the pressure increases. The stretch receptors, they are activated, and there is a peristalsis wave, then that saves, that propels the stool forwards, and that helps to relieve the constipation. In case of Right. osmotic probiotics, they increase the water content in the large intestine. They also, the water in the large intestine, which I said is they are more uh, form a liquid stool, because they prevent the water absorption in the large intestine, and then the stool volume, naturally the intestinal volume increases, then the stress, again the mechanism is the same, the stress registers is activated, and the stool is propelled forward. And the जी. third one, which is they act on the enteroreceptors in the intestine. These are the stimulant and purgatives, and they increase both the intestinal motility and the intestinal secretion. And the Okay. last, which is usually mostly used for the hospital patients, is the stool softeners. Basically, they soften the stool so that they facilitate the easy passing of the stool. This can be given both rectally and both orally. These are the Okay. basically four Questions types are. of we are using nowadays, but they Yes. are all So safe. yes, these are safe and they should be prescribed, if I'm not wrong. Yes, 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 yes. Yeah. And we So prescribe it. यहाँ पर That the four usually prescribe. जी, तो यहाँ मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल ठाकरन जी का और कृष्णा किटूर जी का. कृष्णा किटूर जी पूछते हैं, गुड मॉर्निंग सर, इंटरनल हेमोरॉइड्स के लिए ही इज बीन प्रिस्क्राइब्ड क्रेमाफिन प्लस फॉर स्टूल सॉफ्टनिंग in the long time use, and what are the complications and what are the alternate medications that I can use. So this is a gentleman who is in the senior citizen category, above 70-year-old. Yeah, what I would suggest is that generally to increase you for getting the things right, we don't have to for the treatment of constipation. We have to first of all adequate fluid intake more than 12 liters per day. Second is Okay. that we have to increase the high fiber content in our diet. हाई फाइबर हमसे किससे मिलता है? हाई फाइबर हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स से मिलता है.
फ्रूट्स में सबसे ज्यादा फाइबर्स हमको जिसमें भी छिला होगा, which whole fruits including mango, grapes, which is all these are all high content of fibers. हमको डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फाइबर है फॉर गेटिंग एडिक्वेट स्टूडेंट्स 35 grams per day 35 in grams say per in day. per day. But the thing is that say if we take a kiwi, it is a basically a berry. कीवी में एक फ्रूट में 2.5 ग्राम्स होता Hmm. है, कीवी में 2.5 ग्राम्स होता है. So we if we take if we don't if we take a whole fruit, better if we can add a fresh fruit juice. Even if we add a fresh fruit juice in our breakfast, then that will also give us a lot of fibers. जी. सेकेंड इज दैट वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा फाइबर्स होता है बीन्स में. हमारे देश में हम्म. जो बीन्स कहते हैं वो बेसिकली किडनी बीन्स हम लोग जो राजमा बल्ले बोल के लेते हैं. बट वन कप ऑफ राजमा गिव्स अस अबाउट 10 ग्राम ऑफ फाइबर. नाइस. वो 35 ग्राम्स के 10 ग्राम्स वी आर गेटिंग फ्रॉम राम वन कप ऑफ राजमा एवरी डे. हम लोग ये थोड़ा सोचते नहीं, बट दीज आर द वेरी हाई स्वीट पोटैटो. If we take a हाँ. baked sweet potato, this is another very good source of high fiber. जी. स्वीट पोटैटो में होता है. बट इसको हमको बेक करके लेना है. अगर आपको, मैं दूसरी बार बताता हूँ कि हमको कौन सा नई चीज लेना है. तो जो ये लेना है वो मैं बता रहा हूँ. एवरी नट्स इंक्लूडिंग एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, जिसका जो अफोर्डेबिलिटी है वैसे अब ले सकते हैं. सीड्स, स्प्राउट्स, ये सब में हाई फाइबर कंटेंट है. एंड दीज आर ऑल प्रूवन मेथड्स दैट दिस विल रिलीव कॉन्स्टिपेशन. जी. इसमें कोई डाउट्स नहीं है. पॉपकॉर्न इज अगेन अ हाई सोर्स ऑफ फाइबर, बट अच्छा. नॉट जो पिक्चर हॉल में मिलता है. उसमें तो बहुत सारे एडिटिव्स हो गए. बट इफ यू प्लेन पॉपकॉर्न इज अ वेरी आई वेरी. हैव ऑब्जर्व समथिंग कि जब मैं पॉपकॉर्न लेती हूँ खास डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, बट बॉइल्ड कॉर्न लेती हूँ तो ठीक होता है. तो वो हाँ. ड्राई होने की वजह से भी कुछ होता है कि सर, यानी तो बॉइल्ड कॉर्न इज एडिंग सम काइंड ऑफ. No, 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 ma'am. Whatever the fiber content is the same in all the whatever form it is. But whenever say जिसमें एकदम फाइबर नहीं होता है, वो है मीट्स, एग्स, चीज, आइसक्रीम, एनी सॉर्ट्स ऑफ क्रीम्स, मार्जरीन, बटर, इसमें एकदम ऑयल्स, इसमें एकदम फाइबर नहीं होता है. So whenever we are adding these things in the to make the things palatable, say I'm using salad, but I'm adding cream to it. राइट. So that doesn't make me a very good diet. जी. आई एम जी. सैलड्स में सारा दिन ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक पिज्जा ले लिया, एक बर्गर ले लिया विद लॉट्स ऑफ चीज, विद लॉट्स ऑफ मेयोनीज. देन दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनी ऑफ अस. सो परफेक्ट. परफेक्ट. एंड हाई फाइबर्स में जिसमें होल ग्रेन्स होता है, अनपॉलिश्ड जो दाल होता है, इसमें जितना भी छिलके रहेगा, जितना भी तो इसमें फाइबर रहेगा. नंबर टू इज द फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर डाइट बोला. थर्ड इज द अबाउट द एक्सरसाइज. इवन हाँ. जो जो एक्सरसाइज वो आपको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएगा, इवन विच इज लाइक अ स्वीपिंग अ फ्लोर, जो हमको बेंड करके करना पड़ेगा, जिसमें एब्डोमिनल प्रेशर आएगा, दैट विल हेल्प. जो पेरिस्टॉल्स में, मैं वो आसन नहीं बोल रहा हूँ कि योगासन, वो सब तो बहुत बेहतरीन काम करता है. जो जो योगासन में मौलासन वगैरह होता है, एक somebody told me. But these are all going to be available. But any household work that raises your intra-abdominal, even say cleaning the household items, if we even gardening, these can all help to relieve constipation. What I'm जी. trying to say is whatever that you can put abdominal pressure, जिसमें भी increase होगा, even exercises like squatting, जिसमें abdominal pressure increase होगा, that will all help to get your digestion into process, and that will all help in relieving the constipation. यहाँ पर, Drugs. सॉरी सर, यहाँ पर आपने बोला कि एक्सरसाइज है, तो आई हैड वन क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्सन हु वाज ऑन व्हीलचेयर. एंड निमेश मेहता जी है, आई एम इन अ व्हीलचेयर एंड कॉन्स्टिपेशन इज माय मेन इश्यू. सो उनको मेडिसिन लेना पड़ता है रेगुलरली टू रिलीव. तो लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड समबडी हु इज बेड रिडन और व्हीलचेयर लेडन, उनको क्या हम सलाह दे सकते हैं? देखिए देखिए, उनको हम सिर्फ जो जिसके लिए डाइट, जैसे हम लोगों ने बोला कि 2 लीटर फ्लूइड चाहिए, से रेनल पेशेंट या कार्डियक कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिनको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन में हम लोग रखते हैं, तो ये इनको तो आप फ्लूइड्स उतना दे नहीं सकते.
This what I'm Correct. saying is a generalized approach. It is not applicable to all patients. जो पेशेंट Very व्हील चेयर में है, जिसमें रेगुलराइज्ड जिनको मोबिलाइजेशन, वो दूसरा मेथड्स ट्राई करेगा। उनके लिए जो हाई फाइबर डाइट वे सब ट्राई कर सकता है, विच इज सेफर, बट डोंट गो फॉर मोबिलाइजेशन। जिनको से सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हाउ कैन दे वॉक? I'm correct. not saying about constipation alone. So you're making a person for diabetes. You're saying something, but इसमें तो नहीं आएगा ना। वो जो वॉक नहीं कर सकते वो कैसे करेगा? हाँ, हम लोग वो कर सकते हैं जो हम अवॉइड फूड विच कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, जिसमें हाई फाइबर जैसे मैंने अब बताया, ये आप अवॉइड कर सकते हैं। जो फूड्स Correct. कॉन्स्टिपेशन को एड कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें सर जिसके साथ उसका कोई अवॉइड नहीं है। हाँ, Correct. डॉक्टर देखेगा कि जो ड्रग्स से, जैसे हम लोगों ने बोला कि डायूरेटिक्स वगैरह कुछ ड्रग्स से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो डॉक्टर वो लोग तो जब देखते हैं तो वी यूजुअली कीप दिस थिंग्स इन माइंड। एंड अगर कोई पूछ रहा था देर इज अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन अदर देन बीइंग ए डिपेंडेंट, एंड थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर देता है ऑन द लॉन्ग रन दिस ड्रग्स। So basically, what I told you is the mechanism of the drugs is the same. That is, मैंने जैसे बोला कि स्टूल कैसे फॉर्मेशन होता है, ये वही लेवल में कहीं कहीं काम करता है अगर लार्ज इंटेस्टाइन में वगैरह ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो कभी कभी तो इसका डिपेंडेंस आएगा ही। देयर विल बी सम रेजिस्टेंस इन दिस ड्रग्स। दीज आर, आई एग्री विद देम कि इसमें ऑन द लॉन्ग रन थोड़ा इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, जी, बट वी and कैन also ट्राई। continuation. Yeah, in continuation, sir, राहुल ठाकरन जी का क्वेश्चन भी था कि उनकी पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, कोई चूरन या पाउडर लेता हूँ तो बस उस दिन इफेक्टिव रहता है, फिर सेम कंडीशन वापस आ जाता है, प्लीज हेल्प। आई रिक्वेस्ट ऑल माय ऑडियंस टू काइंडली प्रोवाइड देयर एज, जेंडर एंड अदर डिटेल्स एज वेल व्हिच कैन हेल्प। जी सर, सो ये वैसे हम बात कर रहे थे कि थोड़े लैक्सेटिव्स है जो सेफ हो सकते हैं, ये चूरन जैसे जो हम लेते हैं इनका क्या प्रभाव हो सकता है? Let me tell you then first. Just give me 5 minutes. I'm giving in a very short yete कि what are the types of laxatives we use. Then everybody can get all the answers which they're looking for. ओके बस सर। जैसे मैंने पहले बताया कि we have basically using 4 types of laxatives. One is the bulk laxatives. What they does, they contain some non-absorbed hydrophilic colloids. They increase the bulk of the intestinal contents by water absorption. ये पानी खींच लेता है इंटेस्टिन से। तो इसलिए क्या होता है, मैकेनिकल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टिन बढ़ता है। देयर विल बी द स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर्स एंड देयर विल बी मोर पेरिस्टॉल्सिस, इसीलिए हमको स्टूल पैसेज में फैसिलिटेशन होता है। 1 ग्राम, जैसे 1 ग्राम कैरट प्राय 20 लीटर ऑफ पानी, 1 ग्राम ऑफ वाटर खींच सकता है। ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव सेड, जे कौन सा सेफ है कि नहीं है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सा बल्क लाइजेटिव्स होता है, जिसमें डायटरी फाइबर्स होता है, which we what we are also saying the dietary modifications, जो dietary vegetable fibers, fruit fibers, these are all a form of bulk laxatives. So whatever home remedies you are doing, you are also taking self medications yourself, and you're getting a benefits from the medicine as well. नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट्स जो है, अब जैसे बोला कि साइलियम सीड, मिथाइल सेल्यूलोज सीड, वॉट एवर चूना बोल रहे हैं आप, वो सब आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सम सिंथेटिक्स नॉन एब्जॉर्ब रेजिन्स होता है, जैसे कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल, वो सब मिलता है कॉमर्शियली। सेकेंड इज दैट वी ट्राई ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में क्या होता है, दीज आर वाटर सोल्यूबल बट नॉन एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स। ये बेसिकली वाटर कंटेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन बढ़ाता है। ये दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और एक नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है लैक्टिलोज, और नॉन ऑर्गेनिक होता है मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। तो बेसिकली ये भी वही काम करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर कंटेंट बढ़ाता है। लैक्टिलोज जो होता है वो आपका अमोनिया भी कमाता है। तो इसीलिए हम लोग हेपेटिक, जिसको एनकेफेलोपैथी है, उनमें लैक्टिलोज ज्यादा यूज करते हैं। But these are all, lactulose itself is broken up by the colonia bacteria into fructose and galactose. Later on, this is fermented into lactic acid and acetic acid that helps in the peristalsis. This is the way. These are all safe drugs. And whatever you say, milk of magnesia or whatever the other forms of saline purgatives, which I am saying,
They remain, they absorb, retain the water, they increase the fecal volume, increase the peristalsis, and thereby the excretion of the stool is facilitated. Similar is the peg which we use for colonoscopy and everything, polyethyl glycerol. And thirdly is that we are saying whatever I said, the stimulant purgatives, these are they directly act by stimulating the enteric nervous system. This ends in peristalsis and in the end ends in purgation. There are three types of available: castor oil, anthraquinones, we say, and the last is bisacodyl. These are the three types of drugs that comes under the stimulant characteristics. But one is that they all act on the large intestine, and the thing is that they are non-absorbable. So that's a good. Most of these drugs are that is why safe. And the fecal softeners are also non-absorbed drugs that they softens the feces. And as we use sodium docetatate, this can be given orally as well as parectally to soften the stool and aid the passage of the stool. So basically, what I was trying to say, these are all the four tries and the mechanism of action I have tried. मैंने बहुत सिंपल तरह से समझाने की कोशिश किया, बट मेरा कहने का मतलब है these are all basically safe drugs. हाँ, कोई फॉरेन काम करता है, कोई on the long term काम करता है, but we can safely consume them. But हाँ, effectiveness on the long run कम हो जाता है. अच्छा, तो With आदत सी पड़ that, जाती है कैसे? yeah, दिस हैबिट फॉर्मिंग? हैबिट, हाँ, हैबिट हो जाता है, डिपेंडेंस जी, होता है. आई एम नॉट हैबिट, डिपेंडेंस होता है. हाँ। एंड सर, ये जो इट डिपेंडेंसी हो जाता है, और ये जो ओवर द काउंटर मिलते हैं जैसे कायम चूर्णा बोलते हैं या कुछ और चूर्णा वो बोला बोलते अगर हैं। वो हर्बल ओरिजिन है, जो मैंने बोला जो प्लांट सीड्स से अगर कुछ कुछ काम होता है, देखिए सीड्स में बहुत सारा फाइबर्स होता है, जो एमनी पंपकिन सीड्स हो, जो भी चूर्णा मिलता है वो भी सीड्स से अगर बना होता है. आई एम नॉट सेइंग ये हर किसी को कहाँ से बना होता है, लेकिन मैक्सिमम देयर सीड्स, ड्राइड सीड्स से पाउडर होता है. So seeds are have high content of fiber. Basically, they are providing us all with high content of fiber with all the sugars, जी, which we are. all right. So yes, doctor. So while we also talk about what do you call getting habituated, here's an 8-year-old's question. The parent is asking about their child who had an issue. Neha Bajaj ji ka question hai. 8-year-old is on Cremafin because of epigastric pain, epigastric pain and constipation since a year. I've tried everything like prunes, isabgol, dates, fiber, good water, but they are requiring Cremafin plus. Is there a way? इसको टाइम लगता है क्या सर कि या ना, इंस्टेंटली कर उसको ना सकते मैंने बोला कि मेडिकल कंडीशंस तब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. Right from starting from endocrine and disorder of thyroid, तो पूरा असेसमेंट करना पड़ेगा कि न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर इनको है कि नहीं. ये सब बिना देखे बताना बहुत मुश्किल है, बट कोई ना कोई रीजन तो बहुत जरूर होगा फॉर द कॉन्स्टिपेशन. हैं? जी, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज. करेक्ट करेक्ट. सो अदर का अदर टेस्ट भी करवाना पड़ेगा कि खाली या ये वी नहीं हैव टू, हाँ, पूरा कम. कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ इज अ लॉट्स ऑफ जैसे मैंने छोटा करके बताया, इसका वैरायटी ऑफ रीजंस होता है. वी कांट ओके. सिंगली, ड्रग्स ही बहुत सारे रीजंस है, ड्रग्स से भी होता है. तो मोस्ट ऑफ द से किसी कोई भी बीपी का दवाई ले रहा है, कोई पार्किंसनिज्म का दवाई ले रहा है, कोई अदर एंटीकोलिनर्जिक दवाई ले रहा है, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन है. मोस्ट ऑफ द एल्डरली मैंने कॉन्स्टिपेशंस आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एज वेल. बट से वी कांट स्टॉप ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन बट रहता यहाँ है. पर बच्चा है ना सर, द केसिंग हाँ, क्वेश्चन इज वही मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी का डिफरेंट अप्रोच है. Pediatrician may be a better one to understand than me, but the thing is that कि इनको देखना पड़ेगा कि क्यों. आई एम सेइंग इंडिविजुअल, हर पेशेंट का इंडिविजुअल प्रॉब्लम अलग अलग होगा. इनका भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम अलग से हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, देन आई कैन कमेंट. Absolutely, sir. ठीक है. So I think you should get a consultation. You must have visited Miss Neha Bajaj to multiple. You might have to stay on, hold on, and then find out the actual reason for constipation. It should not be just constipation. Dive deeper is what Dr. Amitava Ray is suggesting.
So next question is Sophia Chavniwala, 27-year-old है, bloating है, gassy all the time है, and it's really difficult to pass the stool. Uh, in such cases, because 27-year-old है, यंग है, लाइफस्टाइल के अगर कोई है या कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी करना पड़ेगा. हाँ, एक बात ये है कि हम लोगों को क्या है, स्टूल रिफ्लेक्स में जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स इज बहुत इंपॉर्टेंट. कभी कभी होता है कि हमको एक ना दो चीज करना पड़ेगा. कुछ भी करिए सुबह, किसी कोई वॉट एवर एवरीबडी प्रैक्टिसेस, किसी को ल्यूक वार्म वाटर में हनी और एक नींबू लेकर के खाने से बाद चले जाते हैं. We have to make a toilet habit. We have to make a toilet routine. Discipline is important in every whatever we try to do. ओके, एक कप चाय बिस्किट के साथ वो भी स्टिमुलस होता है. दैट इज व्हाट वी कॉल गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला विद डाइटरी मॉडिफिकेशन, रेगुलेशन ऑफ एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ फूड्स विच डजंट कंटेन फाइबर, हाई फाइबर डाइट लीजिए. मेक अ रेगुलर टॉयलेट हैबिट. मेक किसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको अब जो करने के बाद आपको टॉयलेट आ जाए. And concentrate when you are doing a toilet. If you are when you have to concentrate, you have to fully put your energy when you are doing, if doing a, न्यूज़पेपर्स, मोबाइल फोन्स अंदर मत yeah, लेके जाइएगा. that is what This is important. ये कुछ डिफरेंस होता है. It's not like that. It's not like that. हाँ, even if it is, if you are a chronic constipation patient, you have to think about these things. छोटा छोटा चीज है ये, बट ये काम कर लेता है. And second is that you have to maintain a solid routine, first of all, and then whenever the urge of, पहले पहले क्या होता है कि urge आता है, कोई रुक लेता है. And whenever the things are stopped, then only the receptors stop working. तभी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि आपका रिसेप्टर्स तरह से दिमाग में मैसेज सेंड नहीं करते कि रेक्टम फुल है. सो देन यू जब जी में चाहे आगे गए तो उसमें नहीं होता है, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुल. सुनो, अब खुद को जानो कि क्या है, एंड देन अपने सिग्नल्स को सुनना सीखो. एक आदत, एक हैबिट ये फॉर्म करो. Right. Do not ignore that your victim has sent a signal, and don't wait. Don't keep it in hold for a very long time. Otherwise, constipation will also become a habituated thing. ये You just, yeah. Gee. So next question is Sadiq Siddiqui. Sir, my father is 63-year-old, diabetic and hypertensive. He's taking a PEG-leg solution for constipation, but can he depend on it for very long? Same question कृष्णा जी भी पूछ रहे थे earlier कि अगर ये सीनियर्स है और काफी देर तक, काफी दिनों तक ये इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं क्या? पेगलेक, एज आई सेड, मैंने क्लासिफिकेशन में ये मैं लैक्सेटिव्स ने बताया कि पेगलेक इज अ सेफ ड्रग. वैसे उसका नॉन एब्जॉर्बेबल है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं. बट थिंग इज दैट कि रेगुलर ओनली डिपेंडेंस हो सकता है. तो और इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट उसका है नहीं. बट द थिंग इज दैट अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो उसका थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मैंने आपको बताया लिक्विड स्टूल होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये सब आता है ऑन द अच्छा. लॉन्ग रन. मैंने ओह, इसमें मैंने जो होना है. बट द थिंग इज दैट जे इसमें वॉट एवर यू ट्राई टू डू, मैंने आपका फादर है, जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स नहीं है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट. जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, हाई फाइबर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर टॉयलेट रूटीन, डिसिप्लिन, टॉयलेट डिसिप्लिन, ये सब तो हम लोग कर ही सकते हैं. वॉट एवर वी कैन फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स. एंड इफ इट इज नॉट yeah. गोइंग, परसिस्ट विद द ड्रग. कुछ नहीं करना है. जो मेडिकल कंडीशन पापा का चल रहा है और जो ड्रग्स पापा का चल रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, एक बार देख लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है. Right, sir. So, while we're talking about this, Sushma is 23-year-old, very young. She's having a constipation and hemorrhoids issue from the age of 15 and 16. Sometimes the problem increases and sometimes it gets normal. What to do? देखिए, इनको भी मैंने एक ही बात बताया, हिमोरेड्स इट्स अ सर्जिकल, या आप कोलोनोस्कोपी करके हिमोरेड्स का सोल्यूशन डिफरेंट है, बैंडिंग वगैरह कर सकते हैं, काट करके निकाल सकते हैं. सेकेंड इज द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको वही चीज करना पड़ेगा, डाइट, हाई फाइबर डाइट, अवॉइडेंस ऑफ डाइट विच डज नॉट कॉज फाइबर,
सेकेंड इज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, एंड अगर जरूरत पड़े तो मेडिकल जो ड्रग्स है वो लेना पड़ेगा। बट फोरमोस्ट आपके लिए मैंने जैसे आपको बताया, रेगुलर आप तीन चीज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के अंदर फ्रेश फ्रूट जूस डालिए, ड्यूरिंग लंच हैव अ फ्रेश सैलड, रात को अगर इफ यू वेन यू आर हैविंग डिनर, हैव अ bowl of fresh vegetables soup. आई थिंक दिस विल बी बैलेंस, बीच में कैरोट्स रहेगा, बीन्स रहेगा। और अगर चाहे तो एक बार दिन में, मैंने जैसे बताया कि दिन में राजमा या स्वीट पोटैटोज का एक डिश रखिए जिसमें आपको हाई फाइबर कंटेंट आपको मिल जाएगा। जी, और जैसे स्प्राउट्स फ्लैक्स भी हो होता सकता है। है, चिया सीड्स हो सकते हैं, फ्लैक्स सीड हो सकता है, पंपकिन सीड, वॉलनट्स, ये भी ऐड कर लेंगे तो आप ऐड कर ऑब्वियसली। सकते हैं, इसमें वेरिएशन रख के करिए। अब वॉट एवर यू डू, मैं भी अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, यूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट यूज योर वेट। हर चीज का आप अपना ब्रेन यूज कीजिए और कीजिए। राइट, एंड देन these things can nag for a very long time. जैसे Yeah, yeah. सुषमा, we These understand are all, that. this is all irritating. Whenever there is a constipation, first of all, say, whenever we are going out of the house, हमको incomplete evacuation हुआ है, so you are feeling abdominal fullness is there. कोई किसी को फील होगा कि abdominal fullness is there, खाने का इच्छा नहीं रहेगा, there will be a जी, lack of air, and it सर will दर्द be होता है, सर दर्द होता है कॉन्सेंट्रेशन वर्क नहीं होता है। एकदम। एंड फीलिंग ऑफ इरिटेशन रहेगा कि हमको कभी भी माने वर्क हैम्पर हो सकता है, हर जगह हमको आइडियल वॉशरूम रिलेशनशिप मिलेगा। हैम्पर हो सकते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहता है। वी डू अंडरस्टैंड दैट दीज आर वेरी नैगिंग। जैसे या सुषमा को आपने बताया कि अगर हेमोरॉइड्स है जिसके सर्जिकल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, वेरी यंग गर्ल, सो शी शुड बी आजकल वो सर्जरी करते भी नहीं है, आजकल तो वो कोलोनोस्कोपी करके बैंडिंग करके निकाल देते हैं। तो अच्छा। इट्स अ सिंपल आउटडोर प्रोसीड्यूर ना, वो बैंडिंग करके टाई करके या लूप देके वो पॉलिप निकाल देते ओह, हैं, एज इट्स सिंपल एज। so मतलब you would, it's yeah, done na, it's done in 10-15 minutes, same day procedure. oh, But that is done by a gastroenterologist, not a surgical person. correct, not the surgical. Okay, okay. ठीक है sir, next question is Gautam Mukherjee. A fortnight ago, suddenly I felt that I had the urgency to poop. Even after taking Dufalac or loose motion, loose medicine, nothing much improvement. कब्ज, कोई आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है शायद कब्जहार, वो लेने के बाद ही मुझे बोवल क्लीन हुआ। तो अर्जेंसी लग रहा था बट बोवल एवैक्यूएट नहीं हुआ, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। तो No, ये no. Yeah, yeah, ड्यूफेलैक की yeah. तरह। That is what I said ना in the first time, कि constipation की ये भी एक बड़ा सिम्टम होता है कि feel like rectum में stool impacted है। I feel like digital evacuation of stool, सामने कुछ अटक के रखा है। सो ये सब जो दादा आप बोल रहे हैं, ये नॉर्मल फीलिंग्स ही है, ये आपका कॉन्स्टिपेशन ही है दादा। मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो उसका इलाज कीजिए, अगर नहीं नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो आपको जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है, आपको नेट में या बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे हमारा जैसे टॉकिंग्स मिल जाएगा जिसमें आपको बता देगा कि आपको डाइट में थोड़ा थोड़ा क्या डाइटरी चेंजेस लाना है, क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है। एंड विद द सिंपल रेडिसेस दादा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बट हाँ, यू आर ए पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, नो डाउट अबाउट इट। और अगर आपको कुछ भी चीज से, इफ सीड प्रोडक्ट से या कुछ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपको आराम मिल रहा है, सो लॉन्ग दीज आर, आई सेड, सो लॉन्ग दीज आर नेचुरली डिराइव्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वट एवर मे बी द प्रोडक्ट सोर्स फ्रॉम। सर बट मैंने अपने ही प्लेटफॉर्म पे किसी एक्सपर्ट से सुना था कि दे कॉज इरिटेशन टू द बोवेल्स एंड इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ तक कौन सी हद तक ले सकते हैं? दीज आर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है। नो सर, नो, ये द नो, सीड्स, नॉट इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, कि ये जो काइम चूरना हो सकता है या कोई सडनली लेते हैं जो सॉल्ट्स लेते हैं, ये बॉल को या गैस्ट्रिक ऑर्डर को इरिटेट कर सकता है। ये मैंने किसी एक्सपर्ट से सुना था अपने ही प्लेटफॉर्म पे। इरिटेट मतलब वो जो इरिटेट होता है वो है, मैंने जैसा आपको बताया कि वो जो पेरिस्टोसिस है उसको मैंने न्यूरोजेनिक सिम्टम को थोड़ा ट्रिगर करता है। जैसे कोई किसी को कॉफी लेने के बाद, कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेने के बाद जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है उसमें पेरिस्टोसिस ज्यादा बढ़ता है, देन वी नीड टू गो फॉर द टॉयलेट। बट जिसको पेट साफ रहता है उसको तो वैसे नहीं आएगा। ओनली थिंग इज दैट
ये सब प्रॉब्लम तब आएगा जब आपको माने anybody can have these problems is that when there is a problem of constipation and when there is incomplete evacuation of the rectum, then only these feelings may come कि हमको बार बार stool आ रहा है. Okay. 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 Right, sir. So I hope, Gautam Mukherjee, you find this answer helpful. Question is Prashant Tadepalli, kid is 2 year old and has serious constipation issues. Any specific foods that you suggest? एनी स्पेसिफिक इज दैट इनको हाई फाइबर डाइट दीजिए, वेजिटेबल सूप्स दीजिए जिसमें लॉन्ग बीन्स होता है जिसमें फाइबर्स बहुत लॉन्ग फाइबर्स होते हैं. इनको वेजिटेबल सूप फ्रूट्स जैसे मैंने आपने बताया विद छिलके के साथ सूट्स दीजिए. इनको इफ शी लाइक्स नट्स एंड सीड्स जो इनको साइज से दीजिए व्हाट शी कैन टेक. एंड इनको कुछ भी बेडीज चलेगा इन इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड राजमा टाइप बीन्स ये सब आप उनको दे सकते हैं. कुछ भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सूप एज आई आई वाज अर्लियर आल्सो डिस्कसिंग जी. रेगुलर ब्रेकफास्ट में एक बार फ्रूट जूस रखिए, फ्रेश फ्रूट जूस जिसको फ्रेश फ्रूट से बनाया हुआ है, होल फ्रूट से बनाया हुआ है. रेगुलर लंच के अंदर एक रखिए फुल सैलड्स जिनका छिलका छिला हुआ ना हो. ट्राई टू टेक इट स्प्राउट्स रखिए लंच के अंदर, एक दिन छिलके सैलड्स एक दिन स्प्राउट्स रखिए. एंड रात को एक वेजिटेबल सूप दीजिए जिसमें लॉट्स ऑफ फाइबर्स होगा. आई थिंक एंड Ji. मेक अ टॉयलेट हैबिट. मेक हर say 8 a.m. you are going up after all completion of work, he or she is getting, your baby is getting up from sleep. Right. After Right. getting up from sleep, give her a warm milk or give her a warm water or anything. Go, make her go to the toilet. Make a toilet discipline, make her a toilet routine. Then see how the things goes working on. If it doesn't work, then talk to your pediatrician if she has any medical problems. I think same answer goes with your question, Sanjeev Hazarika ji. Your question is answered already. So I'm moving on with the next question. Nishi Panjani, is severe constipation the first sign of colon cancer? So will constipation lead to cancers as well, or is it a sign of a cancer? No, it may be one of the signs, but the thing is that it may lead to cancer due to chronic irritation. But ये सब एक दिन में नहीं होता है. G. If it's ये सब कोई भी cancer, you have to think about it. I will not talk about negative things, but what I would say is that कीप अ पॉजिटिव अप्रोच. कोई भी कैंसर एक दिन में नहीं होता है और अगर होगा भी देन दैट्स बैड लक. वी डोंट देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट. But the thing is that what we can do is that we can avoid, we are here to talk, we can avoid constipation. There are lots of constipation complications, starting from what I would say is that there will be anal fissures. We have already discussed that there will be piles, there will be anal fissures, there will be diverticulitis, there will be fecal impaction due to the hard stools being uh, locked in the colon, and exposed tissues of the rectum that have slipped out of the, and there may be rectal prolapse because of the exposed tissue of the rectum being coming out of the anal opening. So consequences are, there may be some consequences which are serious or potentially serious, but we can avoid this. But एक बात मानिए, एक साल में 2 साल में कुछ नहीं होने वाला है. You have to rate, but एक साल 2 साल बहुत टाइम होता है. Why would we prolong it for such a long time in our present day scenario where there is so much advancement in medicine? You go to a medical help, you go to a gastroenterologist, everybody is there to help you out. But first and foremost is that we have to make out the causes of the constipation. There are a G. variety of medical causes that causes constipation. Not only the diet, I agree with all of you. Not only diet and the fluids and the lack of exercise. These are not the sole, or the lack of discipline. These are not sole contributors of the constipation. There are a variety of lot of factors, as I discussed very shortly. But the thing is that with a positive approach, we can overcome these problems. G. Not to scare everybody, but it might lead to a cancer or it My might be a sign of cancer as well. ठीक है. So next is colospa. ये क्या होता है? Is it useful in constipation?
Rakesh Kumar Dutt Verma ka question hai, and also Gautam Mukherjee, who had a colonoscopy, revealed that altered bowel, internal hemorrhoids, colospa, retard problem somewhat improved. I do consume adequate water, no hard stool. So, what is a colospa, sir? It is actually, Colospa is actually a brand name. Ah, Okay. that's it, is it? Okay. I thought it is a Yes. procedure. Colonoscopy is a procedure. Colospa is a brand name. Yes. But the colospas, these are motility affecting, influencing medicines that are given by the gastroenterologist. But the thing Ji. is that with colospa, symptoms, spasmodic symptoms may improve. There is no doubt about it. But the thing is that it is should be taken by consultation with a medical person. Colospa should not So, be consumed by self. the OTP, sorry, OTP बोल रही हूँ, over the counter Actually, prescriptions. actually, it is Colospa works well in irritable bowel syndrome. It is a irritable bowel. It works well in irritable bowel syndrome, but it is got nothing to do with it. Can reduce the spasm, cramps, and everything in your in one stomach. It can reduce the symptoms. Thus, it can relax the smooth muscles, but it has got nothing to do with the constipation. एनीवे Colospa. आपने इरिटेबल बowel सिंड्रोम के बारे में बताया है, तो थोड़े दिन कॉन्स्टिपेशन होता है, थोड़े दिन डिसेंट्री होता है, कभी कभी ब्लोटिंग होता है, कभी कभी पेन नहीं होता है, कभी नॉर्मल होता है. व्हाट इज दिस पेंडुलम जहाँ कॉन्स्टिपेटेड थोड़े दिन रहता है, थोड़े दिन डिसेंट्री भी रहता है? आई नो इट टेक्स एन एंटायर एपिसोड, बट वन क्विक ब्रीफ अबाउट आईबीएस Actually, कॉन्स्टिपेशन. yeah. Whatever the person below before this question asked. Actually, irritable bowel syndrome is something which is related to stress, and it is one of the emotional factors. Irritable bowel syndrome does not have a organic disease. Now, it may be a constipation dependent, and it may be a diarrhea, constipation dominant, and a diarrhea dominant. Constipation dominant is that we still has that of constipation, but the diarrhea dominant, there is abdominal cramps and everything, where there is hypermotility, colospa types of drugs that works well there. What the last question was all about. But the thing is that the this is irritable bowel syndrome is not actually an organic disease. It's not actually a much of an organic. You can't get irritable bowel syndrome as a clinical diagnosis. There is nothing a structural abnormality that can be found in irritable bowel syndrome. Right. तपन ज्योति बिस्वल जी का क्वेश्चन है, एसिडिटी एंड ग्लूटेन इंटॉलरेंस आर दीज रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन? No, acidity and gluten intolerance, these are different things. Dyspepsia is something, acidity, milk and milk products. If you are intolerant to gluten, if you are intolerant to milk and milk products, this can cause dyspepsia. It's better to avoid. But this has got nothing to do with each other. Yeah, yeah. Some So, there, some lactose intolerance. Some bodies may have yes, gluten intolerance. It's better to avoid that, but whether that will be, these are most frequently associated with diarrhea. Constipation is rare with these problems. ओके. सर मनीष जैन जी का क्वेश्चन है, 54 ईयर ओल्ड है ये, और अर्लियर ही वाज कॉन्स्टिपेटेड, ही इज डायबिटिक एज वेल, बट नाउ आई पास द स्टूल्स 5 times a day, ऑलवेज फील दैट स्टमक इज फुल. तो ये ऑल्टर कैसे हो गया है? एनी Yeah, yeah, आईबीएस की तरह? yeah. The thing is that इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इनको डायबिटीज itself डायबिटिक एंटेरोपैथी होता है. If the diabetes is not controlled, diabetes itself affects the autonomic nervous system of the intestines. So एक बार इससे आपको डायरिया हो सकता है. यू चेक योर शुगर लेवल्स. हाँ, और डायबिटीज का किसी किसी ड्रग्स एंड मेडिसिन जो होता है, मेटफॉर्मिन से, इनसे भी डायरिया होता है कभी कभी. एक्सेसिव मैंने मेटफॉर्मिन का डोज हुआ तो जस्ट चेक वेदर इट्स योर with your doctor which of one of these is happening with you and get sorted out. Yes, yes. So,
Laxatives per mosme Paul. I've been taking various types of laxatives. Still, my stool is not passing clearly. So, how do these? People are trying multiple things and multiple क्या बोलते हैं types of relief for constipation, but it remains. So it's a continuous process. How can we help them? या जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोल होता है, मैंने पहले बताया 3 महीने के ऊपर जिनको है या जिनको सालों से है, एक बार देख लीजिए आप लोगों का मेडिकल कंडीशंस कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं, या आप लोग हम ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो दवाई लेते हैं, जो मेडिकल कंडीशंस हम लोगों को है, वेदर वी एनीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। अगर जी इसमें से कोई प्रॉब्लम माने आता है तो वी हैव टू ट्रीट दैट कंप्लेन रादर, नहीं तो ये सेकेंडरी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होगा, प्राइमरी कंप्लेंट अगर ठीक नहीं रहेगा तो। सेकेंड इज दैट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वॉट एवर नेक्स्ट इज दैट हमको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है, रिफाइंड जिसमें फाइबर्स नहीं है, वो सब फ्रूट्स थोड़ा अवॉइड करना है। और रेगुलर बाउल डिसिप्लिन ये सब करने का बाद भी अगर नहीं हो रहा है, देन ओनली यू गो फॉर द मेडिसिन। मेडिसिन के जी बाद मैंने बताया कि ये सब काम करता है बेसिकली इन द वे आई सेड, ये सब फिर भी ये विद द नॉर्मल स्टूल प्रोसेस का हेल्प भी इनको लेना पड़ता है। You have to walk with the stress receptors, they have to walk with the volume of the stool, जिनको भी जो भी चाहिए। हाँ, अगर नीचे आ गया देन ओनली यू कैन गो विद द स्टूल सॉफ्टनर्स एंड एवरीथिंग, नहीं तो यू हैव जी टू वॉक द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ स्टूल फॉर्मेशन। सो अलग से तो ये कोई काम नहीं करेगा। सो आपको मेटाबॉलिज्म दीदी ठीक, जो कोई भी है दादा या दीदी, आपको वो ठीक करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होने से कुछ नहीं ठीक होने वाला है। एंड अंडरलाइंग जो कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज हो, थायराइड हो, वो भी जो जो भी है वो ट्रीट करना करेगा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको कॉन्स्टिपेशन सर, को। सो थ्री क्विक आंसर्स। एक, रिप्रोडक्टिव सॉरी फर्टिलिटी के लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा है, इज दैट ट्रू और इज इट ट्रू? वन क्विक आंसर सर, यस नो, और नो। डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इट, बट हाँ, इसके साथ जो आपको थोड़ा हार्मोनल इफेक्ट्स है, थोड़ा बहुत कर सकता है, बट इफ योर डाइट एंड फाइबर इज इंटेक इज हाई, नथिंग इज गोइंग टू हैम्पर या PCOS and thyroid है, will that have an effect on constipation? इट। बोथ आर गोइंग टू हैव इफेक्ट ऑन इट, तो कॉन्स्टिपेशन इसको को। पहले ट्रीट करना है या इसको पहले ट्रीट करना है, कॉन्स्टिपेशन को या PCS दोनों ही थायराइड कंट्रीब्यूट को? करना। पीसीओडी इज द पहले थायराइड को चेक करना है, क्योंकि पीसीओडी विल लेटर ऑन कंट्रीब्यूट टू डायबिटीज। पीसीओडी इज रिवर्सिबल if it weight reduction can be there. PCOD itself will not do to constipation because अगर उनको पहले डायबिटीज वगैरह थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाइपोथायरॉइड जिसको हो गया उसको डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन में कंट्रीब्यूट करेगा वो। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट इज वाइफ इज बेडरिडन विद ब्रेन ट्यूमर, सो क्रिमाफिन प्लस यूज कर रहे हैं, इज इट दैट इज द ओनली वे टू कंटिन्यू? सेफ, सेफ है, डन, थैंक यू सर। पावन बंसल, किडनी प्रॉब्लम है, सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एज वेल, व्हाट शुड ही कीप इन माइंड? इनको जो अगर किडनी प्रॉब्लम है तो अगर इनको इनको तो ज्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। डाइट से ही आपको रखना है दादा। प्रोटीन इंटेक इसमें तो आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, जो किडनी प्रॉब्लम है। फ्रूट्स तो आप ले नहीं सकते, पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन है। तो आपको हाई फाइबर डाइट में ही रखना है। और इनको रेगुलर जो आसन्स वगैरह है, ये सबसे रेगुलर इंट्रा एब्डोमिनल एक्सरसाइज, इंट्रा एब्डोमिनल मसल टोन बढ़ा के रखना है। यू डोंट हैव मच जी, मोर ऑप्शंस लाइक दिस। superb, sir. Thank you so much. I think with that, I come to an end of the questions from our audience, because almost all the questions that we have answered, and they are in the similar nature. So, with this, I would want you to give us top tips to handle constipation on a regular basis. या मेरा टॉप टिप्स ये होगा कि यू टेक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, lot of fibers in the diet. Fibers में vegetables रखिए। Vegetables के अंदर you can take lots of nuts and seeds, lots of राजमा रखिए, sweet potatoes रखिए, popcorn रखिए in your fruits। have walnuts, have apricots, everything in your fruits। sprouts रख सकते हैं आपको खाने में। लो फाइबर जिसमें है वो डाइट अवॉइड कीजिए। जैसे
आपको चीज, मक्खन, ऑयल्स, मीट्स, एग्स, इसमें फाइबर एकदम नहीं होता, ये सब अवॉइड कीजिए. Fourth is that whenever you go to the make a toilet discipline, आपको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, सुबह खाने नींद से उठने के बाद चाय वगैरह पी के आप टॉयलेट जाने का रेगुलर रूटीन कीजिए. Whenever you going to the toilet, make a conscious effort to concentrate on your toilet so that you completely evacuate yourself. Make sure you are having adequate fluid and adequate sleep per day. And lastly, stay active and exercise regularly. Raise your intra-abdominal tone. Don't ignore the urge to pass stool. And with these few tips, I am concluding my session today. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Amitava. It was a pleasure having you as always. Namaskar, sir. Thank you. So that was our session on constipation, treatment, diet, and home remedies, etc. So now it's your turn to answer my questions. I'm going to ask you 3 questions of health quiz. You have to answer the questions over YouTube chat only. I am mentioning it again. YouTube chat only. Winner's name will be announced towards the end of the show, and winners will be selected at the sole discretion of Apollo 24/7 team. And if I take your name to be the winner, you have to write back to us at marketing at apollo247.com by Wednesday of every week. So gift vouchers will be shared with you only if you can share your contact details and write back to us at marketing at apollo247.com. And here are the questions for this week. These are the 3 questions on your screen. Fill in the blanks. Untreated constipation can lead to what? This is starting with P blank L blank S. What is it? Question number 2. True or false? Constipation is not life threatening. Is that true or false? Question number 3. Yes or no? Lack of dietary fiber, fluids, and exercise can cause constipation. Yes or no? I repeat all the questions. Untreated constipation can lead to what? P से शुरू होता है, fill in the blanks. Constipation is not life threatening. True or false? A lack of dietary fiber, fluids, and exercise can cause constipation. Yes or no? Keep your answers coming in, and I'm waiting for the winners to be announced. But for now, we have coupons. Here are the coupons that you can use on Apollo 24/7. The first one that you can use is ASKDOC150 Ask Doc. This is the code where you consult top doctors direct from Apollo hospitals and get 150 rupees cash back on online doctor consultation as well. So the next one that we give away is First 3 FIRST3 order medicines direct from Apollo and get 25% off on online medicine orders. The code you know is First 3. The health our viewers who join us every week, here's a code exclusively for you. Remember this code HH247. Get 199 off on online consultation with Apollo doctors and up to 20% off on medicine orders as well. This is in addition to the code that we have given earlier. And also, let me remind my audience that Apollo 24/7 as an app is fantastic. So you get the entire services of Apollo hospitals just in your hand, but you can also use it simply as a WhatsApp partner as well. If you're looking for medicines, if you're looking for it's just like a text or call away. You can 9355 247 247 number save kar lijiye, chat kar lijiye, and get your medicines as well. And next week we are talking about an interesting subject. As we all know that this is the month of cancer awareness, we are talking about cancer in men. All the things that you need to know specifically related to men. I think this is high time that we talk about cancers, especially in men, because as far as my understanding goes, we have talked enough. We have been talking about cancers in women specifically, but we want to talk about cancer in men this time. So please join us with all your questions, and I'm waiting for your answers to come. Then let's see who's all participating. अच्छा, काफी सारे लोग हैं. अनमोल अग्रवाल जी आप वापस भी आ गए हैं. सिमरन सिंह इज किंग. Okay, and the winners for this week are Anmol Agarwal, Simran, and Aman. Congratulations. I repeat your names Anmol Agarwal, Simran, and Aman. Congratulations. Write back to us. You know how to claim. And we shall see you next week. Thank you all for joining us this week in this session. Every question is important because your question is not just yours,
It's an answer for anybody else who's not asked a question. It's information. Thank you so much. Keep joining us and keep asking your questions. Namaskar.